Hi everyone, I'm Rakhi and let's begin with the question number 36 and it's on page number 131 of chapter number 4, chemical bonding and molecular structure. So let's see what the question is. So the question is compare the relative stability of the following species and indicate their magnetic properties. O2, O2 positive, O2 negative superoxide and O2 2 negative peroxide. So we need to compare the relative stabilities of the following species and we have to indicate their magnetic properties. Fine, so let's begin with the solution of the question. See, there are 16 electrons in a molecule of oxygen, you all know, okay? So I should write there are 16 electrons in the molecule of oxygen. Molecule of oxygen मतलब O2, ठीक है? That means 8 electrons. That means 8 electrons. 8 electrons from each oxygen atom. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन लिखते हैं. Hence, electronic configuration of O2 molecule can be written as, have a look over here, sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, ठीक है. Now sigma 2pz2, then pi 2px2, pi 2py2, pi star 2px1 and pi star 2py1. This is the electronic configuration of O2 molecules. See 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. So this is the electronic configuration of O2 molecule. So now we will be calculating out the bond order from here. ठीक है? I just want to remind that since 1s orbital of each oxygen atom is not involved in bonding, therefore the bond order, therefore the number of number of electrons, therefore the number of bonding electrons, that means NB is equals to how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है? And the number of anti-bonding electrons, that means N of the A is equals to how much? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है? देखिए, no, not 5. I should not count the electrons which is present in antibonding of 1s. I should count the electrons from here. 1, 2, 3 and 4. Fine. So we have to ignore the electrons which are present in 1s orbital because 1s orbital of each oxygen atom is not involved in bonding. Therefore अगर हम इसको हटा दें तो अब देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 1, 2, 3 and 4. तो बॉन्ड ऑर्डर of O2 is equals to half N what? NB minus NA. Number of electrons in bonding orbital minus number of electrons in anti-bonding, which is equals to half
within bracket 8 minus 4 which is equals to 2. ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 जो आया है वो 2 आया है. ठीक है, यहां तक प्लीज फटाफट से लिख लीजिए. आई विल बी मूविंग ऑन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव. रिमाइंड or memorize or please have a look on the bond order of O2 and all of the following which I'll be solving. ठीक है, please do write them. So मैं एक साइड में लिख देती हूँ बॉन्ड ऑर्डर किसका मैंने कैलकुलेट किया. बॉन्ड ऑर्डर अभी मैंने कैलकुलेट किया है O2 का जो निकला है 2. मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है. ठीक है, फॉर माई फर्दर मार्किंग ऑन. ठीक है, तो अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं O2 पॉजिटिव के लिए. तो O2 पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन हैज बीन लॉस्ट फ्रॉम O2 molecule because it is over here given O2 positive and positive means loss of 1 electron. 1 positive means loss of 1 electron. तो अब number of electrons present in molecule is equals to 15. प्लस मतलब यहाँ पर O2 पॉजिटिव आया है 1 प्लस दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है. Therefore now the electronic configuration is equals to, please have a look, sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, fine. Then sigma 2pz2, okay. Then pi 2px2, pi 2py2, pi star 2px1. ठीक है, this is the electronic configuration of O2 positive molecule. Fine. Now calculating out the bond order. Bond order is equals to half number of bonding electrons minus number of anti-bonding. So we will ignore the electrons which is present in 1s atomic orbitals. Will be seeing from sigma 2s because the 1s orbital are not involved in the bond formation in O2 molecule. So अगर हम number of bonding electrons देखें तो calculate the number of bonding electrons. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 8. Now number of anti-bonding electrons 1 2 and 3. तो कितना हो जाएगा ये 5 by 2 which is equals to 2.5. So the bond order of O2 positive is equals to 2.5. So मैं यहाँ लिख दे रही हूँ bond order of O2 positive is equals to 2.5. ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर. Coming to the next case O2 negative which is superoxide. तो अब O2 नेगेटिव का मतलब है कि जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे O2 मॉलिक्यूल में, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन्स. तो 16 में एक और ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 17 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज ओवर हेयर गिवन यूनि नेगेटिव चार्ज. तो जब नेगेटिव चार्ज आता है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल is equals to 17. ठीक है, therefore इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी अब सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, then sigma 2pz2, then pi 2px2, pi 2py2, pi star 2px2 and pi star 2py1. ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Fine. Now we will be calculating out the bond order is equals to half number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons. So half number of bonding electrons काउंट करते हैं, 1s को इग्नोर करते हैं, तो बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. बॉन्डिंग इज 8 एंड एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए हैं 1 2 3 4 and 5.
तो क्या हो जाएगा ये 8 minus 5 is equals to 3, 3 by 2 which is equals to 1.5. So the bond order of O2 negative, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो bond order of O2 negative is equals to 1.5 we have calculated. ठीक है, now please note down all these things in your notebook. I'll be calculating the bond order for O2 2 negative which is peroxide. Fine. So bond order of O2 2 negative. O2 2 negative means हमारे पास O2 molecule में 16 electrons हैं. In a molecule of dioxygen we are having 16 electrons. So अगर उसमें 2 negative charge add हो रहा है, that means 2 electrons are added on into 16 electrons. Now the electrons have become 18 electrons. ठीक है, so it is O2 2 negative. So number of electrons in the molecule is equals to 18. ठीक है, electronic configuration, therefore electronic configuration is equals to sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 sigma 2p z2 pi 2p x2 pi 2p y2 pi star 2p x2 and pi star 2p y2. So count the number of electrons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Fine. So now we will be calculating out the bond order. Bond order is equals to half n a minus n b. So number of half number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons. So bonding electrons count करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो it becomes half within bracket 8 minus number of anti-bonding 1 2 3 4 5 6 6. So it becomes 2 by 2 is equals to 1. So the bond order for O2 2 negative is equals to 1. ठीक है, अब देखिए bond order for O2 is equals to 2. Bond order for O2 positive is equals to 2.5. Bond order for O2 negative is equals to 1.5 and bond order for O2 2 negative is equals to 1. ठीक है, यहाँ हमने सबके bond orders मैंने आपको बता दिए हैं. I just want to tell you that कि bond dissociation energy is directly proportional to bond order. ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये. नहीं मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ध्यान रखिएगा. तो आई कैन से दैट मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, देयरफॉर मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द स्टेबिलिटी. ठीक है, so on this basis we can say the stability order. On this basis the stability order is, तो देखिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 पॉजिटिव का, so it is higher stable. फिर उसके बाद O2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2, फिर उसके बाद में O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर और सबसे लीस्ट बॉन्ड ऑर्डर है O2 2 नेगेटिव का. सो अगर आप यहाँ पूछ रहे हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, सो दिस इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज. द मोर स्टेबल इज O2 पॉजिटिव, देन O2 नेगेटिव एंड द लीस्ट स्टेबल इज O2 2 नेगेटिव व्हिच इज peroxide. Fine. So I hope the question is clear to you all and the solution is very much clear to you all. But if anybody is having any doubt regarding the solution of this question, then please do mention your doubts in the space given below. Well, this brings me to the closing of the session and it's Meera. He's saying you all a goodbye.